Hello everyone. Today's topic is physiology factor determining speed. Chapter number physiology and injury in sports. फिजियोलॉजी फैक्टर डिटर्मिंग स्पोर्ट्स ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी जो नॉर्मल ह्यूमंस और स्पोर्ट्स पर्सन की स्पीड को इफ़ेक्टिव करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, मसल स्ट्रेंथ, electricity and relaxing capacity of muscle, mobility of nerve system, biomechanic reverse, and metabolic factor, and the flexibility. These are the main factor affecting determining speed. Speed is a very essential component of physical fitness. The intensity of speed primarily depend on central nerve system. That is why speed cannot be increased much with training. It is determined through a following physiological factor. First is explosive strength. What is explosive strength? For a quick and powerful activity, there should be some explosive power in muscle. For example, if there is no explosive power in football player, he cannot kick or strike the ball high. Apart from this, the explosive power depend upon the structure, size and condition of muscles, but through training there is a chance of improvement in the coordination, and muscle size can be improved for the speed to some extent, right? Then muscle composition, that is very important. Muscle composition, कि मसल का कॉम्पोजिशन क्या है? एवरी मसल इज मोस्टली मेड टू टाइप ऑफ फाइबर, means FTP, that is fast twitch fiber, and STF, that is slow twitch fiber. As earlier you know, the the red cell and white cell, the percentage of fiber in each muscle is different. The muscle which have the fast twitch fiber contract quickly with more speed, hence it produces more strength, but slow twitch fiber do not contract so quickly but continue to remain contract for a longer period or time. In fact, muscular composition is determined by heredity. It can be changed through training. So we can't develop much speed, and there is a less percentage of muscle that give endurance. The ratio of fast twitch fiber and slow twitch fiber determine the possible speed of muscular contraction. Then elasticity and relaxing capacity of muscles. अब ये इलास्टिसिटी एंड रिलैक्सिंग कैपेसिटी ऑफ मसल्स के भी हम अपने मसल को कितना हम डीप हाई प्रेशर में ले जा सकते हैं, खींच सकते हैं, और उसको कितनी जल्दी हम रिलैक्स कर सकते हैं. ठीक है ना? हम एक मतलब यू कैन से ना resistant power through the elasticity of muscle can be moved to maximum range, which reduce the inner hurdle and is instrumental in speed up the activity. The muscle which get relaxed soon contract easily. Then mobility of nerve system, कितनी जल्दी हम अपनी बॉडी में ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, मसल को पावर देते हैं, ब्लड सर्कुलेशन रोटेट करते हैं, दैट इज मोबिलिटी ऑफ नर्व सिस्टम. In fast twitch fiber, muscle contract and relax quickly. When there is a fast contraction in against muscle and antagonists, muscle can get relaxed and motor sensory nerve do their work efficiently. It is called the movement of central nerve system, which take place due to reduction in speed for doing the fast quick exercise. Nervous system can be trained to a limit because the speed depend on the certain other factor as well. Then biomechanical reserves and metabolic factor.
For doing the fast and quick exercise, muscle required more energy. This energy is our muscle is obtained through the presence of phosphorus. For example, adenosine triphosphate and creatine phosphate CP is there is less quantity of ATP and CP, that is in the muscle which contract. The muscle after some time get relaxed in the absence of generation for of energy. The percentage of power and quickly in ATP and CP, that is ATP means adenosine triphosphate and CP, that is creatine phosphorus, can be increased through training. So we 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 can state that biomechanic reverse and metabolic power determine speed. Then most important, सबसे important part है flexibility. Flexibility increase the range of speed. Whenever speed with flexible body does a speed related activity, they feel less strain in the muscles, which as a result converts energy. Right? This is a determining factor of speed. First is explosive strength, second is muscular strength, third is elasticity and relaxing capacity of muscle, mobility of nerve system, biomechanic reverse and metabolic factor, then flexibility. Now key points, we with little bit go for key points. मॉर्फोलॉजी मीन्स जो हमारे बॉडी का आकार वगैरह है उसके बारे में. हाइपरथेरेपी क्या होता है? एब्डोमिनल एनलार्जमेंट ऑफ द एनी बॉडी पार्ट और ऑर्गन्स. फास्ट ट्विच फाइबर जो फटाफट रिएक्ट करते हैं और थक जाते हैं. मैकेनिकल रिवर्स जो हमारे अंदर जो बायोमैकेनिक्स रिएक्शंस होते हैं. एरोबॉलिक कैपेसिटी जो हमारी स्पीड के होती है. ऑक्सीजन इनटेक एंड ऑक्सीजन अपटेक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज ऑक्सीजन इनटेक? ऑक्सीजन इनटेक होती है जो हम हार्ट हमारा इनटेक आउटटेक करता है. एंड अपटेक क्या होता है? जो हमारे मसल जो हमारी एक्सरसाइज करते हैं, जो मसल जो हमारी बॉडी को यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, दैट इज ऑक्सीजन अपटेक. एनाबॉलिक कैपेसिटी रिलेटेड विद स्टेमिना. लैक्टिक एसिड जैसे थोड़ा सा होता है. देन VO2 मैक्स. व्हाट इज VO2 मैक्स? दैट इज वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स. देन हार्ट यू नो, दिल. देन स्ट्रोक वॉल्यूम, कितना प्रेशर पड़ता है उसके लिए. कार्डियक आउटपुट, उसमें कितना हमारे को ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है दिल की तरफ. वाइटल कैपेसिटी, कितनी यूजेस हो रही हैं. सेकेंड विंड वो होती है जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद हम अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करने के लिए सेकेंड विंड का यूज़ करते हैं. देन एजिंग यू नो कभी कैसे एज को बढ़ता है. बोन इंजरी, जॉइंट डिसलोकेशन, वार्मिंग अप, कूलिंग डाउन, पीस, रेस्ट, आइस, केयर एंड माइस एंड फर्स्ट एड.